this month, in the starting, we received an order confirmation of 2.5 CR, which will consist of minimum of 4 to 5 containers. Sir, like there was a financial instability in the family. There was mounting debt in the business and in the family also. और हमेशा एक survival game रहता था. I was only able to meet my daily needs. It was complete depressive journey before getting into export. So, Namaskar everybody, my name is Bhagirath Goswami and I'm founder at Being Exporter. Today I'm truly excited to have somebody who's extraordinary Yuva of our nation and what he caused in his life. He started from first shipment, turned as a serial exporter. Let me introduce Ankit Saini from Rohtak. Ankit, welcome and happy to have you here. hi, good afternoon, sir. Thank you. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. Awesome. I'm super excited to have this conversation as a podcast because ये podcast में बहुत सारी जिंदगियां बदलने वाली हैं because जब आपकी जर्नी लोग सुनेंगे. I'm super excited to have you here. Thank you very much. So let's start the journey. Ankit, first of all, introduce yourself so that viewers can connect with you. Here you are. Hello, everyone. My name is Ankit Saini. I'm from Rohtak, Haryana, and I was into manufacturing business from past 7 years. And before that, I was into job related to export industry. I was working in Africa. From there, I had little bit hint of exports, doing export. So now I'm a serial exporter and being a part of being an exporter community. Got it. Great. Thank you, Ankit. Introducing yourself. This is really awesome. So Ankit, tell us about what thought drive you to be in export industry? क्या चीज थी वो जो आपको एक्सपोर्टर बनने के लिए या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में ले आई? Sir, like there was a financial instability in the family. There was mounting debt in the business and in the family also. And from my domestic customers, there was payments on the credits. There was a persistent delays, due to which my firefighting mode was always kept on. I was into firefighting mode और हमेशा एक survival game रहता था. I was only able to meet my daily needs and always paying my interests. There was no saving for me and it was complete depressive journey before getting into export. So I had little bit of experience कि export में ना बहुत कुछ होता है. It's a very big industry, but never knew कि कैसे होता है. But I chose that कि इसको भी thought दिया जाए. That's why I came into export industry. Wow, Ankit, thank you very much for being very authentic, my respected brother. You have no clue how many lives you are going to touch today and today and onwards because this will be posted on YouTube, probably in Instagram, in few reels, in social media, on advertisements and many platforms. Thank you very much for being authentic. Ankit, how you came to being exporter community? How you know about what brought you to the being exporter community? Sir, for me, it was like I was always sharing my financial concerns with my wife. And one day in her supportive gesture, she booked a workshop for me and she was like, you, Ankit, this is the only place from where I can think you can get into the export industry. So I was a bit persistent at going for this workshop. So, but she insisted me to come to this workshop, and it was a 3-day workshop. And in the evening on the first day, when I joined the workshop, and then when I heard about Bhuneshwari ma'am, she turned from 23 rupees now she is a serial exporter, and it was clear to me on that day because I'm in the right business and I found the right place. Because जो community मुझे चाहिए था, एक driven force चाहिए था कि cause there was always कि I used to push back myself. तो एक community मुझे चाहिए था जो जिसके साथ मिलके मैं कुछ आगे बढ़ सकूं, मेरे goals in line हो सके. So after getting into this workshop, after 2 days, I booked the mentorship program for it. And on mentorship, it was clear कि यार export तो हो जाएगा. After getting into this community, but I have to serve a bigger goal. तो मुझे purpose बिल्कुल clear समझ आया sir, getting into being exporter community. Wow. Got it, Ankit. So first of all, that's really awesome. Your wife suggested that there is something you can explore
And that's the oneness and love you both have for each other. Lot of respect for you. And she booked the workshop for you so that you attend, and then you attended, you saw कि एक्सपोर्ट सच में बड़ी इंडस्ट्री है, ये बिजनेस किया जा सकता है. Followed by a few case study, you started believing that this is something what you're looking for. Now, the moment you entered into the program, as you rightly addressed, that now you are connected to the purpose. In fact, you have bigger goals. Ankit, how you started your journey and how you sent your first shipment? What was your roller coaster ride? Share with audience. Here you are. Like initially, I was coming from a different mindset. So mindset एक अलग ही था. There was a procrastinations also there. But slowly and steadily आपने hand holding किया. I followed your assignments. Or for first, like I joined in last year September. So initially for 3-4 months I was की foundation clear हो चुका था. I was doing the assignments, inquiries आ रहे थे, but those inquiries was not converting into the leads. So थोड़ा बहुत disempowerment था. But when I attended the first boot camp, so cause my purpose was not clear and my why was not clear. So as you know, on day one I was completely blackout. Before that I was not knowing कि life is a black and white. So I was completely blackout on the day one of the boot camp. From there on I understood कि मुझे किन के लिए खड़ा होना है, मुझे किन के लिए काम करना है. And मुझे आज तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने नहीं चाहा था. So it got clear to me on in the boot camp. And next 15 days I sent my first shipment, and the day we received the advance payment from the customer, there was a like happiness in my family was like this कि my father was calling to all the relatives, his friends कि पीछे को export का order मिला है. And like it was like मैंने उनको अपनी life में उससे ज़्यादा कुछ कभी नहीं देखा कि he was literally for 3 to 4 hours he was on the calls and telling everyone about this. Wow. Wow, Ankit. And Ankit, this is so authentic of you. My respected viewers, जब भी जहाँ भी आप हमें सुन रहे हैं, probably on YouTube platform or on Instagram Reels or on Facebook or in the event or any of the Facebook or some advertisement. My dear entrepreneur, it is the purpose which derives you. See what Ankit shared, sharing right now. If you understand this, he's associated with us in September until February. So September, pura month, September, October, November, December, January, February. 6 months, kuch bhi nahi hua. Now, isn't it a magic? Then suddenly, kuch thought badalna, 15 din mein results aana. What was that? So I remember, Ankit, during the boot camp, you were the one, har kisi ki aankhon mein aansu la diye the. And then you were the one who was like, walk out. I said, Ankit, take right, wash your face completely and come back. Or else take left and go back. And you choose that you want to do something for your family. I saw that superhero born for your family, for our nation. And that was the kick. Everybody saw that. And then within the next 15 days, pehla payment aana, papa 4 ghante tak sabko khushiyan baatna. Ankit, as a parent, completely understand the world of your father. That's so awesome of you. Ankit, then continue, जब आप ये काम कर रहे थे, पहली बार डील कर रहे थे, या मल्टीपल कंसाइनमेंट्स भेजे हैं, इसमें फियर कोई आता है, हिचकिचाहट कभी आती है, कभी डर लगता है पैसों का, कभी ऐसा कि कंसाइनमेंट बायर नहीं छुड़ाएगा. Over to you. Sir, after first shipment, like initially from the first shipment, I got the this order from the customer, and we declared the payment terms will be 50% advance and 50% on the performer invoice. So he shared the this order with me, and he advance नहीं आया तो so I talked to you. You said कि अंकित deny कर दीजिए जब तक order पैसा नहीं आता है तब तक रोकड़ा नहीं आता है. I know I can remember your words कि जब तक रोकड़ा नहीं आए तब तक धंधा हम मानेंगे नहीं कि आया है. So I wrote to him because I need the advance. So next day only he sent the 50% advance, and from there on कि सर कभी भी ये फील नहीं हुआ कि cause it is the safest mode of business. अभी तक जितना भी मेरा जर्नी रहा है 34-35 years का, पूरे लाइफ टाइम में कभी पापा को ऐसा बिजनेस करते हुए नहीं देखा था कि जहाँ पर पहले पैसा आता है. और वो भी वी वर डूइंग अ डोमेस्टिक बिजनेस बिफोर दिस. तो कभी सुना ही नहीं था उधार से के अलावा भी कोई एडवांस पेमेंट देता है. एंड इट्स अ इंटरनेशनल मार्केट और उधर से आना तो बहुत मुश्किल लगता था.
बट आया तो बिलीव सिस्टम चेंज हुआ एंड फ्रॉम देयर ऑन सर लाइक वी डिड मल्टीपल शिपमेंट्स और एडवांस आता है लाइक इवन बिफोर वी सेंड द शिपमेंट्स बैलेंस आ जाता है परफॉर्मा इनवॉइस पे एंड मोर देन दिस कि सर इन माय जर्नी आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड दिस कि इनिशियली जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो डेब्ट से जो मेरे पास एम्पावर लेबर्स था या स्टाफ तो था ही नहीं क्योंकि आई वाज इनटू दिस कंप्लीट फायर फाइटिंग मोड 6 या 7 लोग थे जो ऑपरेटर्स थे मशीन्स के ऊपर जर्नी बढ़ता गया कॉन्फिडेंस आता गया और वो जो कर्ज वाला डेप्ट वाला पार्ट था या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी वो बिल्कुल हट चुकी थी जो हमेशा मुझे रोक के रखती थी आगे बढ़ने के लिए एंड वी कीप ऑन रिसीविंग द ऑर्डर्स इनिशियली ऑर्डर्स का जो वैल्यू था वो कम था बट प्रॉफिट मार्जिन में हमने उसमें काफी अच्छा काम किया लाइक वी हैव वर्कड ऑन 500% मार्जिन और जनरली 50% तक अभी काम किया है सर एंड लाइक जर्नी इसमें चलता रहा और लाइक वी आई केप्ट ऑन अटेंडिंग द बूट कैंप्स जो हमारे बीइंग एक्सपोर्टर जो कम्युनिटी है सर उसने मुझे बहुत हेल्प किया है और जब भी मैं आई फेल्ट डिसएम्पावर्ड ही वाज ऑलवेज देयर एंड कम्युनिटी वाज ऑलवेज देयर कि होगा ये हो जाएगा तो आई वाज क्लियर अबाउट इट कि चीज़ें होंगी और बड़ा भी होगा छोटा हुआ है तो बड़ा भी होगा स्लोली एंड स्टेडीली हमने शिपमेंट्स इंक्रीज किए छोटे से थोड़ा थोड़ा लाइक फ्रॉम 6 boxes we increased to 10 boxes 15 boxes then we sent a single pallet shipment then multiple pallet shipments and and recently this month in the starting we received an order confirmation of 2.5 crore which will consist of minimum of 4 to 5 containers. And talking of the profit margins, we will likely to book, other than my manufacturing profit, we are going to book around 30 to 35% of profits in that. And what are the payment terms condition, Ankit? Sir, again 50% advance and 50% on scan document. Wow. आई वुड लाइक टू ऐड कि सर जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्टअप हुआ ना लाइक आप मुझे कर्ज से डर नहीं लगता रिस्क लेने से डर नहीं लगता सर वो मुझे कम्युनिटी ने दिया है वाओ वाओ उसी के दौरान कि अकेले नहीं आगे बढ़ना ये भी क्लियर हुआ कि जितने ज्यादा लोगों को मैं आगे लेके चलूंगा ना अपने साथ तो उतना ज्यादा मेरी जर्नी आई कैन एंजॉय कि क्योंकि किसी और के लिए भी करने के लिए होगा सो नाउ वी हैव ग्रोन फ्रॉम 6 टू अप्रॉक्सीमेट 60 लोगों का हमारा कंपनी हो चुका है and now we like moving forward we have a vision of कि 100% जो मेरा manufacturing unit है it will be a woman organized unit उसमें from start to finish technical business है but we are investing into trainings and everything जो पहले हम नहीं कर पाते थे domestic business में तो wow completely कि सर roller coaster ride रहा है और now कोई भी मुझे मिलता है I tell everyone here get into sports it can change the thousands of lives around you. Wow, okay, wow, so amazing, so authentic, touched by conversation. My dear viewers, can you understand somebody going through the debts and the family and the kind of mindset you have? So first thing is उस चक्रव्यूह में से बाहर आने के लिए कुछ तो बड़ा करना हो. For Ankit, that's Ankit, he saw export as an opportunity. जब आप हमारे किसी भी प्रोग्राम में चाहे वो 2 दिन का वर्कशॉप हुआ आप आते हैं आपको हम सारी जानकारियां दे देते हैं आप अपना पहला शिपमेंट कैसे भेजेंगे एंड ऑल्सो आई विल सेंड योर मल्टीपल शिपमेंट्स बाय फर्स्ट यू बीइंग एन मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली मार्केट को टैप करें एंड द एंटायर प्रोसेस टिल यू सेंड द शिपमेंट रिस्क मैनेजमेंट एवरीथिंग नॉट ओनली दैट आप मर्चेंट एक्सपोर्ट मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स मार्केट से प्रोक्योर करके आप एक्सपोर्ट करें एंड द थर्ड पार्ट विच इज मोर पावरफुल इज आप मैन्युफैक्चरर्स के साथ जुड़ करके जॉइंट वेंचर करके बिना इन्वेस्टमेंट के मतलब कि मैन्युफैक्चरर के साथ वर्किंग पार्टनर बन के आप काम कर सकते हैं जब आपको सारी जानकारी आ जाती है अब आपको केवल ये काम करना है यू हैव टू इम्प्लीमेंट अंकित जर्नी इज वेरी वाइब्रेंट इट टुक 6 months फॉर हिम टू गेट ऑफ फ्रॉम हिज इनर वॉइस मैं आप सब लोगों को इस माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कभी भी अपने आप को इस प्रकार के सवाल में ना डालें कि कितना जल्दी मेरा कंसाइनमेंट जाएगा इनफैक्ट अगर आपको अपने आप को एक सवाल करना है तो आपको ये करना होगा अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो सीखना होगा सीखने के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना होगा और इम्प्लीमेंटेशन तो स्टार्ट है पहला कंसाइनमेंट तो शुरुआत है यहाँ से कंसिस्टेंसी मैनेज करनी होती है टुक 6 months फॉर हिम टू गेट ऑफ फ्रॉम हिज ओल्ड माइंडसेट
The moment he was clear, he's standing for his family. That's Ankit. Started from minus, turned as a plus company, now being a 60 people organization and impacting women empowerment on the board. Awesome of you, Ankit. So happy for you. Ankit, what are the future plans you have in this industry? सर फ्यूचर प्लान आर लाइक दिस कि अब माइंडसेट और कंसिस्टेंसी मैनेज करना सीख लिया है, प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है, उस डोमेन से भी बाहर आ चुका हूँ कि अपना ही प्रोडक्ट करना एक्सपोर्ट मार्केट में, और हर प्रोडक्ट का एक टाइम पीरियड होता है, वो समझ आया कि देयर इज ऑलवेज अ पीक ऑफ एवरी प्रोडक्ट इन द मार्केट. Wow. वो now we are adding, being a manufacturer sir, like we are adding more products जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, not even doing a merchant as a merchant. We are getting into JVs also. We are talking to different manufacturer, identifying the right manufacturer, and we have increased our next year target from like 10 CR we kept for the हमारे प्रोडक्ट के साथ हम 10 करोड़ ही देख पा रहे थे एक साल का टर्नओवर, बट जब विजन क्लियर हुआ, वाई क्लियर हुआ, अपने माइंडसेट पे काम किया, कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, टीम को बिल्ड किया, नाउ वी हैव इंक्रीज्ड इट टू 100 CR टर्नओवर इन नेक्स्ट के लिए सर. Great. Awesome, Ankit. Awesome. My dear viewers, first thing you need to understand, you have to come in the right product, follow the process, select the right product. Then come into sales. Only one thing, huge market, potential buyers. बस वहाँ तक reach करना है. Generate leads, cross sales. And then backed by the entire process. Once you understand this, what will give you action is, unless and until your purpose is not on the place, no action will come out. See, it's not about some motivation. आपने ये वीडियो देखा, ये एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी आपके सामने है. आप थोड़ी देर के लिए एंकरेज होकर के वापस अपने रूटीन में जा सकते हैं. और दूसरा, अपने आप को एक थॉट दे सकते हैं, क्या ये इंडस्ट्री आपके लिए है? क्या अपने लाइफ का कीमती समय इसमें देने जैसा है? अगर आपका जवाब हाँ आता है, that's where you are. Thank you very much, viewers, for watching. Coming back to Ankit. Ankit, how this program or our mentorship help you out and helped in this journey? Over to you, Ankit. The only thing I was able to do export, या अभी मैं कर रहा हूँ, या कुछ भी, एक और डिसएम्पावरमेंट आता है कभी ना कभी हर मोमेंट पे, लाइक बीइंग एसोसिएटेड विद यू एंड गुरु. तो हमने सिर्फ एक चीज सीखी है कि सर डिसएम्पावरमेंट ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है, वो आएगा ही आएगा. एंड कम्युनिटी इज द प्लेस जहाँ पर हम उस डिसएम्पावरमेंट को दूर करते हैं, वेयर वी कैन सी द सक्सेस स्टोरीज ऑफ अदर. और जब दूसरों की अचीवमेंट्स आती है तो खुशी मिलती है, एंड वी गेट अ न्यू गोल, और कि जब वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता. तो उसमें कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, एंड हमारे जो गोल्स हैं वो कम्युनल भी हो जाते हैं. लाइक पर्सनल आई स्टार्टेड विद अ पर्सनल गोल, कम्युनिटी के साथ जुड़ा था, तो कम्युनिटी के लिए भी गोल्स जनरेट हुए, एंड लाइक बीइंग एक्सपोर्टर कम्युनिटी के बिना सर पॉसिबल नहीं था सर ये सब. Got it, Ankit. My dear viewers, it's obviously that you start taking action in the right direction, you will produce results. What makes big difference? Being in the community, आप लोगों के साथ मिलते हैं, साथ में एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, synergize होते हैं, सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, ये आपको अंदर से वाव मोमेंट देता है. वेरी ऑथेंटिक एक्सप्रेशन ऑफ अंकित. वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर टेकिंग एक्शन. एक्शन लेने के बाद जब रिजल्ट्स इच्छित नहीं हो, इनफैक्ट स्पेसिफिकली जब रिजल्ट्स वो नहीं है जो इच्छित परिणाम है, तो फिर डिसएम्पावर होता है. ह्यूमन नेचर है वो, एंड यू हैव टू कीप ऑन जनरेटिंग टू योरसेल्फ सो दैट यू कैन रीच टू दीज हाइट्स. दैट्स फैबुलस. अंकित, क्या मैसेज देना चाहोगे इस माध्यम से एंटरप्रेन्योर्स को, युवाओं को, ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में? हियर यू आर. माय मैसेज टू द व्यूअर्स इज दिस कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, ये वो इंडस्ट्री है कि जो हम सपने देखते हैं ना खुली आंखों से और बंद आंखों से, वो इस इंडस्ट्री में पूरे होते हैं, और हमने पूरे होते हुए देखे हैं. और यहाँ पर आप अपनी फैमिली के लिए वो कुछ कर सकते हो जो हमें 20-25 साल या 30 साल में पूरा होते हुए नजर आता है. वी कैन फुलफिल दोज गोल्स, दोज ड्रीम्स इन 1 year 2 year के. और अदर देन दिस सर की being exporter community especially, it adds more values to your human values sir. Specifically I will add to this कि human values add on होती है, जो एक अच्छे इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी है, अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत जरूरी है. Wow. And for export industry,
अगेन आई विल से कि यहाँ पर वो सपने पूरे होते हैं जो हम अपने खुली आंखों से हमेशा देखते हैं, जिनके बारे में सोचते हैं, और यहाँ से हमें लाइक वी गेट इनटू दैट एक्शनेबल मोड जहाँ से हम उनको फुलफिल करते हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू come and join our community and serve our nation, our family, और कुछ बड़ा करना है तो this is the only place. Got it. अंकित, any conversation you remember, हम दोनों की कोई भी conversation हुई है, so सबसे ज्यादा टच कर गई हो आपको या मेमोरी में है, वो कौन सी मोमेंट है आपके लिए? For me it was like कि जिस दिन जब भी मैं like I have a true experience of my boot camp itself, कि जब भी मैं बिल्कुल टूटने वाला होता था ना सर, यू हैव हर्ट मी राइट फ्रॉम इनसाइड, कि आपने दोनों ऑप्शन मेरे आगे खुले रखे हैं कि या तो आप जा सकते हो या आ सकते हो टाइम देकर. एंड एवरी टाइम आई केम बैक एंड यू ऑलवेज बिलीव्ड इन मी. थैंक यू फॉर दैट सर, कि करेगा ये, कुछ ना कुछ करेगा. नहीं तो अगर शायद कोई और होता तो सर कि कॉमर्शियली अगर बहुत सारे वी कैन सी नाउअडेज देयर इज अ different classes going on the internet and other places, but sir आपके साथ मिलके मुझे एक वो गुरु मिला कि जहाँ पर आपने मुझे अच्छे से जाना पहचाना, और लाइक कॉन्वर्सेशन वाज लाइक दिस कि अगर जा सकता है तो तेरे पास ऑप्शन है, कोई किसी ने रोका नहीं है. बट दैट इज द ओनली कॉन्वर्सेशन सर की जो मुझे हमेशा याद रहता है कि खड़ा रहना है फैमिली के लिए, परिवार के लिए हमेशा खड़े रहना है. Wow, Ankit, so encouraging. My dear viewers, just to give you an understanding, it was a boot camp and exporters from different corner of our nation, in fact, few from outside and out of India, they were sitting here and we were going on a heated conversation. I love to do this conversation to believe, जो पुरानी belief pattern इसको break करना. And Ankit and I was like on a fire mode. And the moment I said, Ankit, you have choice. Either you can leave or you can stand. I want you to choose what is best option for you. And he was like, sir, I'm blank. And then he started walking off. He was walking outside. I said, listen, right, face wash karo, wapas aao. Left, pack karo, ghar jao. And he said, sir, give me some time. He started walking out. Puri community members mujhe ghur ke dekh rahe the as if I'm a monster doing some wrong stuff to Ankit. And the moment he walked out, darwaze pe khade reh ke turn hoke bolta hai, Ankit, sir, I'm coming back. I said, I know my family. I know to whom I'm speaking. And that's where everybody was having some karuna in their eyes to see me. And then we have this superhero transforming many lives, continuously contributing to our nation. That was Ankit with us, somebody in debt, like huge transformation in the finances, and now being a 60 people company as a serial exporter and future goal, what he shared with you. Viewers, thank you for watching. Ankit, thank you very much for giving your time. Truly grateful. Have a great time and a life ahead. Happy to associate it with you. Thank you, sir. It's all your blessings, sir, and community blessings, sir. Thank you so much.